Assalamu alaikum. Walaikum salam. That is it. Wakas, you can start the session now, and Dr. Rehan will go first. I will go first. So, Waqas, Should we start? Ji Wakas, please start, and Dr. Rehan will be speaking first. Okay. I think so. It was decided that Miss Marin will speak first. Okay, Miss Marine can go. We have arranged the data in such sections. Okay, Wakas, please introduce Miss Marine and start the session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to the speakers and our audience for this collaborative session between giving back to pharmacy in Pakistan and nurturing community pharmacy in Pakistan. I am Waqas Ahmed. I have done my postgraduate training from Aga Khan University Hospital, Karachi. Now working as a clinical pharmacist in Ali Medical Center, Islamabad. Recently, I have completed 1-year certificate on antimicrobial stewardship offered by Society of Infectious Disease Pharmacists of America. I will be moderating today's session regarding antibiotic stewardship in Pakistan. Audience, you can ask the questions in chat box that will be answered at the end. So we have 2 guest speakers with us. First one is clinical pharmacist Dr. Mehreen Muzammil from Aga Khan University Hospital, Karachi. She has done PharmD, MPhil Pharmacology, and she has more than 8 years of experience. She has worked in emergency pharmacy, internal medicine, critical care pharmacy, and also participate in antimicrobial stewardship program of Aga Khan University Hospital, Karachi. Over to you, Dr. Mehreen Muzammil. Dr. Mehreen Muzammil has some issues or problems in voice.
Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, you are audible. Thank you so much, Vikas, for the introduction. Um, let's start our session. Sorry for being late because of some internet issues. So the topic that we have today is antibiotic stewardship. So first we will discuss the basics that are defined by CDC and other organizations for applying stewardship in any organization. So first look at what is stewardship. Stewardship is defined as the careful and responsible management of something entrusted to one's care. And if we talk about antibiotic stewardship, it is the effort to measure and improve how antibiotics are being prescribed by clinician and used by patients. इसका मतलब ये है कि we are just trying that antibiotic use is always rational and they are not used in a wrong way. They are only used when they are needed. IDSA and other organizations define antibiotic stewardship as the coordinated intervention designed to improve and measure the appropriate use of antibiotic agents by promoting selection of optimal antibiotic regime, including dose, duration, and route of administration, cost, and adverse effects. So what antibiotic stewardship program outcomes are? It both optimizes the treatment of infection and it also reduces the adverse events associated with the antibiotic use. So what first we discuss CDC core elements. हमारे पास जो CDC के core elements हैं उसमें कुछ points define हैं जिसके जरिए we can create our own program. हम अपने institute में इन steps के through जो है वो antibiotic stewardship program को implement कर सकते हैं. Sorry So the for first interruption. is Sorry for interruption. आपकी slides move नहीं हो रही. Kindly slides remove. Slides move नहीं हो रही. Forward नहीं हो रही. Kindly slides. Is it visible now? Hello. जी slides move नहीं हो रही. Slides move नहीं हो रही. Are slides visible now? Slides are visible. Let me share again. Slides are visible, but they are not moving. Let me know when the slides are visible. Vikas, are these visible? Hello. Can you hear me? Dr. Zishan, if you can go ahead and share Dr. Marine's slide with us, and Dr. Marine can do the voiceover, please.
Next slide, please. Next. So we have discussed these points. So we were discussing the core elements that are required for the implementation of antibiotic stewardship program. The first that are leadership commitment, accountability, drug expertise, tracking, reporting, and ongoing education. Next slide, please. So hospital leadership commitment क्यों जरूरी है? क्योंकि when leadership is committed, you will get the whole staffing and all the structure that is required for antibiotic stewardship program. And अगर उनकी तरफ से आपको support है, तो you can run it and you will be supported and you will be motivated. So leadership commitment emphasize the necessity of antibiotic stewardship program and having dedicated time and resources, क्योंकि उसमें आपको resources भी चाहिए, आपको time भी चाहिए, हो सकता है उसमें team चाहिए हो, from microbiology, from IT आपको support चाहिए होगा, और team collaboration with the ID physician. So when leadership is committed, you can do all these very easily. Next. अकाउंटेबिलिटी में ये है कि लीड्स जो है फॉर द टीम, एक तो हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट लीडर्स की बात कर ली कि उनका जो है इन्वॉल्व होना या इंटरेस्टेड होना या कमिटेड होना बहुत जरूरी है. अकाउंटेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ द ASP टीम. इसमें जो है दो लीड्स हैं, एक फ्रॉम ID साइड and one is from pharmacy side, and they both are responsible for all the management of the implementation of all interventions and counting the outcomes and reporting it to the hospital leadership. Next. So the basic requirement is pharmacy expertise, और पहले जो CDC ने recommend या लफ्ज इस्तेमाल किया था, that was drug expertise. अब जो है recent literatures have showed कि pharmacy department का involved होना for antibiotic stewardship program is very important, and that is the reason that drug expertise is replaced by the word is pharmacy expertise. So pharmacist is required as a co-lead, and pharmacy department is more important when you are implementing in any organization the antibiotic stewardship program. Pharmacy engagement is very necessary. Next. So action में हमारे पास जो है वो बहुत सारी interventions आ जाती हैं, and action depends on which area you are implementing antibiotic stewardship program. अभी हम जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो एक्शंस हैं जो हम हॉस्पिटल में या इन पेशेंट की सेटिंग्स में जो है जो इंटरवेंशन CDC की तरफ से रिकमेंडेड है. लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. सो वो वाले एक्शंस हैं जिसमें हम पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव कर रहे हैं व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड, और उसमें जो इंटरवेंशंस रिकमेंडेड हैं दैट आर प्रायोरिटी इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव एंटीबायोटिक यूज, कॉमन इन्फेक्शन बेस्ड इंटरवेंशन, अदर इन्फेक्शन बेस्ड इंटरवेंशन, provider based intervention, pharmacy based intervention, and microbiology based intervention. Next, please. So first we discuss priority intervention. Priority interventions are prioritized because these are the most important and these have the most impact on the antibiotic use. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है प्रायर ऑथराइजेशन, प्रोस्पेक्टिव ऑडिट एंड फीडबैक, and then facility specific treatment guidelines. Next. So prospective audit and feedback क्या होता है? Prospective audit and feedback में ये होता है कि the committee decide कि कौन सी antibiotics का हमें prospective audit करना है. Let's suppose it's carbapenem. So when the patient is on carbapenem in the hospital, तो वो patients जिनको carbapenem hospital में मिल रहा है उनको review किया जाता है when they have completed certain period of time of that therapy, and then उसको ये check किया जाता है कि आया तो ये antibiotic ठीक भी मिल रही है या नहीं, and then ASP committee जो है उसको review करने के बाद physician को inform करती है.
let's suppose if we found we think that a patient is not getting antibiotic appropriately, उसको जरूरत नहीं है antibiotic की, तो we inform physician to either call ID or DC the antibiotic. अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो वो हमारे compliant होते हैं, और अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो they are non compliant. So this is how the prospective audit is being done, and their feedback is given to the prescriber कि भाई हम आपके इतने मरीज थे and you have been using antibiotic rationalize, or have you said okay with our recommendation. So this is how the feedback is being given. Next. Next please. प्री ऑथराइजेशन में जो है हमारे पास ये होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, यानी कि वो दवाइयाँ या वो एंटीबायोटिक जो है वो हर डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने की इजाजत नहीं होती। अब इसमें दो तरह के सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने फर्स्ट डोज भी जो है वो आईडी अप्रूवल के बगैर डिस्पेंस नहीं करना होता। दूसरा ये होता है कि आपने कंट्रोल्ड में रखा हुआ होता है और उसमें जो है 72 आवर्स के बाद आप कहते हैं कि नहीं आईडी अप्रूवल होगा तभी जो है वो फार्मेसी डिस्पेंस करेगी नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द इंटरवेंशन प्री ऑथराइजेशन, और the study has proved that this can help optimize initial empiric therapy because it allows for expert input on antibiotic selection and dosing, और इस तरीके से एंटीबायोटिक यूजेज जो रिस्ट्रिक्टेड है उनका बहुत कम नोटिस किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। फैसिलिटी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में ये होता है कि इंस्टीट्यूट अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं और फिर उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सबको शेयर किया जाता है, एंड एवरीबडी यूज दैट गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द एंटीबायोग्राम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो द प्रैक्टिस रिमेन सेम ऑल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट इंटरवेंशन इज कॉमन इन्फेक्शन बेस्ड इंटरवेंशन। इसमें ये है कि स्टडीज ने ये प्रूव किया कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एंटीबायोटिक का यूज सही नहीं है, या हम कह सकते हैं उसको कि मिस यूज हो रहा है, और इन कॉमन कंडीशंस जो सीडीसी की तरफ से हाईलाइट हुई दैट वर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। लेट्स सपोज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में द गाइडलाइन सेज कि 5 दिन तक एंटीबायोटिक इस्तेमाल होगी एंड समवन इज यूजिंग इट फॉर 7 days, यू कैन इंटरवीन। Urinary tract infection may we have to check that whether the patient is symptomatic or these are just cultures positive. Skin and soft tissue infection may it has been observed and reported well in the studies that कि vancomycin का जो use है वो ठीक नहीं है, the patient is not MRSA positive many times and vancomycin is being used. Next slide please. Next. So we have discussed that every patient with urinary tract infection does not require antibiotic, and many times the patient is asymptomatic, and for that we do not need antibiotic. My trainer always trained me like we do not need to treat the cultures, we need to treat the patient. Next. That we have discussed कि MRSA पेशेंट का नहीं होता और वैंकोमाइसिन यूज ज्यादा हो रहा है, और देयर आर द रेफरेंसेस व्हिच सेज दैट दिस इज बीइंग डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरीके से दूसरे अदर इन्फेक्शन बेस्ड इंटरवेंशन है जिसमें जो है you can target your interventions for sepsis, you can target for intervention with MRSA. हमने अभी soft tissue infection में MRSA का एग्जांपल दिया था. This can be done when there is suspicion in blood or not. तो उसमें भी जो है आप उसको चेस करने के बाद you can tell physician कि आप ये इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं या there is no need of that antibiotic. C. diff की जो new guidelines है, either they are being followed or not, or when the patient is on antibiotic for the longer period of time, the patient get infection of C. diff.
Other interventions जो CDC ने recommend करी हुई हैं that are culture proven invasive infection and review of planned outpatient parenteral antibiotic therapy. When the patient is being discharged, how it's taking, whether the doses are being missed or not. So that can also be reviewed and you can do intervention in that area. Next. So next is provider based intervention. Provider based intervention में जो है antibiotic timeouts है. एंटीबायोटिक टाइम आउट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इफ द पेशेंट इज गेटिंग एंटीबायोटिक फॉर द सर्जरी एंड देयर इज specific time period defined that the patient can get prophylactic the therapy. If after 72 hours the antibiotic is being continued, then there is no prophylaxis role of it because there are defined time period for prophylaxis. So you can एंटीबायोटिक टाइम आउट्स में इस तरह की इंटरवेंशन की जा सकती हैं. और दूसरा जो है पेनिसिलिन एलर्जी का आपने प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया कि व्हेनेवर द पेशेंट इज गेटिंग पेनिसिलिन, तो ये प्रोटोकॉल हमारा हॉस्पिटल का है, वी विल चेक दैट पेशेंट इज एलर्जिक और नॉट, so this intervention can also be done. Next, so pharmacy based intervention. ये तो हर फार्मासिस्ट एक्चुअली हमारा कर ही रहा होता है. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये डोज एडजस्टमेंट इज के अगर रीनल इम्पेयरमेंट है पेशेंट को और पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है, यू एडजस्ट डोज अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट. तो जो है दिस इज डोज एडजस्टमेंट. ऑटोमेटिक चेंजेस फ्रॉम IV टू ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी में ये कि वो एंटीबायोटिक्स जिनकी बायो अवेलेबिलिटी 90% से ज्यादा है, दे कैन बी स्विच फ्रॉम IV to oral therapy, which will decrease the chances of further infection in the patient. Dose optimization. Let's suppose एक पेशेंट को meningitic dose मिल रही है and पेशेंट को meningitic dose required नहीं है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे. और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को meningitic dose चाहिए, उसको जो है लोअर डोज मिल रही है. So this is what the dose optimization is. Duplicative therapy alerts, like there are many antibiotics which do have anaerobic coverage, for example meropenem and piptaz, और उसके साथ अगर दूसरी anaerobic coverage दे रहे हैं, that is duplication. The patient do not require another antibiotic. Time sensitive automatic stop orders. फार्मेसी सिस्टम पे इस तरह के चेंजेस हों कि अगर प्रोफाइलैक्सिस मिलना है पेशेंट को, तो वो 2 दिन के बाद जो है वो खुद ब खुद ऑर्डर DC हो जाए. और इसके बाद एक और चीज है कि ड्रग इंटरेक्शंस, दीज आर ऑल फार्मेसी बेस्ड इंटरवेंशन फॉर एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम. नेक्स्ट, microbiology based intervention में microbiologists that are in your organization can play a very good role. उसमें होता ये है कि लेट्स सपोज आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो 3 दिन बाद आ रही हैं, बट एट द day 1 और day 2 वो कहते हैं कि भाई हमने ये प्लेट में लगाया है एंड वी आर सस्पेक्टिंग दिस, और बिफोर रिपोर्टिंग इट इनटू द सिस्टम दे आर इन्फॉर्मिंग यू, तो दे कैन play a very good role. And they can also play a role in comments section. For example, वायरल लोड ज्यादा नहीं है, सॉरी बैक्टीरियल लोड ज्यादा नहीं है पेशेंट का, तो पेशेंट का जो है ये नॉर्मल फ्लोरा में काउंट होगा या ये इन्फेक्शन में काउंट होगा, तो देयर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. CDC ने जो है नर्सिंग बेस्ड इंटरवेंशंस को भी इंपॉर्टेंट दी है, क्योंकि नर्सेज कैन टेल वेल के भाई पेशेंट कैन टेक ओरल एंटीबायोटिक और नॉट. Prompting antibiotic reviews and timeouts, they can also play a role in deciding in telling actually that whether the patient has taken antibiotic for this time period, and they can remind physician कि भाई इसका prophylaxis का time complete हो गया है. Next slide please. Tracking. So आपने ये सारी इंटरवेंशंस अब कर ली हैं, तो उसके बाद आपकी इंटरवेंशंस का इम्पैक्ट क्या है, इसको ट्रैकिंग कहते हैं. आपने जो है फीडबैक जो ऑडिट्स हैं उनके फीडबैक को कंपाइल करके, दैट इज योर ट्रैकिंग. एंड देन आफ्टर ट्रैकिंग ऑल ट्रैकिंग भी ना आपकी इंटरवेंशन पे बेस करता है, आपने कौन सी इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट किया है. लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टिव ऑडिट, तो प्रोस्पेक्टिव ऑडिट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हाउ मेनी फिजिशियंस हैव कंप्लाइड टू आवर सजेशन,
and how many physicians have not complied to our suggestion. This is our tracking. Next slide. Reporting. फिर जो हमारी intervention का result है, when we are reporting it to the head, that is our reporting, and that actually highlights our effort and highlight कि antibiotic use में pharmacist का क्या role है, किस person का क्या role है, किस intervention से हमें फायदा हो रहा है. So this is actually reporting to the readers. Next slide, please. Education is very important. Educate prescriber, pharmacists, nurses. अगर हमें knowledge होगी antibiotic की, then we can implement all these interventions that we have talked about. और अगर मुझे ये पता ही नहीं है कवरेज क्या है या रीनल एडजस्टमेंट कैसे होगी या कौन से एंटीबायोटिक की 90% से ज्यादा बायोबिलिटी है, इफ I do not know this, I cannot do any intervention. So education is very important for everyone who can play a role in ASP. Next. So अब तक जो हमने डिस्कस किया है, that is antibiotic stewardship for inpatient. Outpatient में भी the elements are almost same, लेकिन आपकी target audience change हो जाएगी. ले आप inpatient में जब implement करते हैं तो your target audience in residents, nurses. Outpatient setting में आपके पास वो patient है, let's suppose emergency department, day care, those who are visiting the clinic. So this is the difference. Next slide, please. Next slide. Previous पे जाइए please, sorry. So actions जो हम कर सकते हैं community में, उसमें evidence based diagnostic criteria. इसमें for example if the patient has pharyngitis, तो उसमें जो है आप cultures करवा के फिर antibiotic दें. ये वो recommendations हैं जो separately CDC ने define की हैं for community ASP program. उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपने हॉस्पिटल में ही करने के लिए अगर कोई फिजिशियन एंटीबायोटिक लिख रहा है तो उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन हो, व्हाट इंडिकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक इज. और एएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिटी में देयर आर स्टडीज के आप हॉटलाइंस और फार्मासिस्ट कंसल्टेशन और ट्रायज सिस्टम अगर पेशेंट के लिए किया जाए तो दैट कैन रिड्यूस द यूज ऑफ एंटीबायोटिक. नेक्स्ट स्लाइड. So tracking of community stewardship is somewhat different from tracking of inpatient. उसमें ये भी है कि हम self evaluation करने को दे सकते हैं to the prescribers actually. At one time implement one intervention. Let's suppose आपने जो है pharyngitis के patient में अगर अपनी intervention को implement किया है, you are trying that every patient who is being treated for pharyngitis actually is diagnosed with this and actually require antibiotic. तो फिर आप उन तमाम patient की tracking and reporting करके फिर उसके अपने goal set करेंगे according to your organization and then you will report it. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ पर हमें एजुकेशन जो है वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की नहीं करनी होती, यहाँ पर हमें एजुकेशन जो है वो पेशेंट्स की भी करनी होती है कि यूज इफेक्टिव एंटीबायोटिक व्हेन नीडेड, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन इट्स नॉट नीडेड. आपको यू कैन इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट पोटेंशियल हार्म्स ऑफ एंटीबायोटिक. और इसके अलावा हम एजुकेशन मटेरियल्स भी दे सकते हैं. क्लिनिशियंस के लिए एजुकेशन सेशन जो हो सकता है वो फेस टू फेस भी हो सकता है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेशंस अरेंज कर सकते हैं और इंश्योर टाइमली एक्सेस टू पर्सन विद एक्सपर्टीज. लेट सपोज अगर फैमिली मेडिसिन के कोई डॉक्टर है तो आपने उनको इन्वॉल्व करके भाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉल फार्मेसी एंड आस्क. One thing that we missed maybe that was that one of the action that can be done in community is प्रिस्क्रिप्शन डिले प्रिस्क्रिप्शन. इन डिले प्रिस्क्रिप्शन ये होता है कि डॉक्टर्स जो है वो एंटीबायोटिक लिख देते हैं एंड जैसे कि आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, आपके कल्चर आ जाएंगे या ये कंडीशन होगी तब आप स्टार्ट करेंगे. तो दिस डिले प्रिस्क्रिप्शन हैज आल्सो रिपोर्टेड टू हैव लेड
use of antibiotic. Next slide, please. So these were all the actions and points that were required by CDC. एंड इसके बाद हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो भी डिजाइन हुआ है. उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव हैव रिव्यूड ओवर स्वॉट एनालिसिस. अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि AMR नेशनल एक्शन प्लान, so you will have a detailed document of this. Here we are just discussing the objectives that are decided by NIH Pakistan. It's actually the awareness and understanding or next is to increase the knowledge, reduce the incidence of infection, optimize the antibiotic use, and develop strategies that can result in rational antibiotics. Next slide. So aim of National Action Plan is that no Pakistani should suffer from AMR in coming years, inshallah. This ends my presentation. Thank you so much for this opportunity. Hope this would be useful activity for you. Thank you. Thank you very much, Dr. Naeem Muzammil, for such an informative session on antimicrobial stewardship in Pakistan. Now I would like to introduce our next guest speaker, Assistant Manager Clinical Pharmacy, Dr. Rehan Anjum from Shifa International Hospital, Islamabad. He is PharmD, MS Bioinformatics, and recently qualified BCPS, Board Certified Pharmacotherapy Specialist. He has more than 6 years of experience. He is leading clinical pharmacy operations, working as a critical care and kidney transplant pharmacist. He is member of Antibiotic Stewardship Subcommittee. He is Director of Pharmacy Residency Program and also working as an Assistant Professor at Shifa Tamir University. Over to you, Dr. Rehan Anjum. You can share your screen. Thank you, Gus, for such a nice session. Thank you, Give Back to Pharmacy in Pakistan, for giving me this opportunity. I hope so I am audible to everyone. Yes, you are audible. Okay, thank you. Thank you, Dr. Marine, for your valuable and full of knowledge session. And in the previous session, we have discussed the core and supplementary strategies that are required for antibiotic stewardship program. Now I will discuss some application point for antibiotic stewardship program. And to go ahead with this, first of all, a successful implementation of antibiotic stewardship program, antibiotic stewardship committee is very important. And what is antibiotic stewardship committee? It is a multidisciplinary committee that's comprised of specialists from the different domains, like from the administration, from the pharmacy sides, from physician sides, microbiologists, epidemiologists, information specialists. So this is the committee that has a role of that ensure the rational use of antibiotics, and it also applies the same concepts as discussed earlier. So I think it's long PPT before, so I just want to give you some break that oranges are healthy. Yes, oranges are healthy. I think so most of us like. This is just to give you a break कि आप लोग ये सोच लें कि शायद आधे घंटे का हमने लेक्चर ले लिया तो बोर ना हो जाए, तो सिर्फ आपको फल दिखाने का मकसद था ताकि आप देखें कि oranges अच्छे होते हैं. If you could have a break with oranges, you can. The concept is low hanging fruit. जब कभी आप बाग में अगर जाएं तो आपके पास जो दरख्त होता है, तो आप दरख्त में से कौन सा फल उतारेंगे? दरख्त में से आप कौन सा फल उतारते हैं? वो फल जो आपके इजीली अप्रोच में हो, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकें, आप वो फल लेते हैं. Might be that fruit is not so sweet as compared to the one on the top, and usually it is, क्योंकि वो पहले ही पिक कर लिया जाता है. So यहाँ का जो कंसेप्ट है वो ये है कि लो हैंगिंग फ्रूट, आप एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम जब रन करते हैं तो आपको लो हैंगिंग फ्रूट की स्ट्रेटेजीज चेक करनी है कि लो हैंगिंग फ्रूट क्या है आपके एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम में. ठीक है, तो आप उन्हीं को लेके आगे चलेंगे. एंड
जैसे कि मैम ने बताया कि कोर्स स्ट्रेटजीज जैसे ऑथराइज्ड फीडबैक, प्री ऑथराइजेशन, रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स लाइक दिस, उसमें एक और जो सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है दैट इज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है। तो IDSA recommends that IDSA guidelines suggest against relying solely on education material for stewardship, and it is education is supplemental strategy, so you should use it with other strategies, core strategies like reauthorizations, etc. But it is a very important strategy and that is necessary for antibiotic stewardship program. And it could be active, it could be passive education to the participants. Like you could have education with lecture, information pamphlets. So education is very important, and I think so it is a low-hanging fruit strategy to start with. So these are the glimpse of our educational materials. जैसे कि लेफ्ट पे हमने XDR टाइफाइड की एडवाइजरी बना ली, और एंड द नेक्स्ट वन इज हमारी शिफा की अपनी जो है एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप की गाइडलाइंस हैं जो कि हमने बनाई थी, जिनको अब हम एवरी 2 years रिव्यू करते हैं। तो अभी हम इसके नेक्स्ट वर्जन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें अब हमने एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप गाइडलाइन में तमाम वो पॉइंट्स जो कि एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड है, लाइक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी क्या है, एंड de-escalation, antibiograms, ये तमाम चीजें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ये डिस्कस की हुई है। So we use this strategy in our hospital as well. So आज की इसमें जो concepts मिस डॉक्टर महरीन ने बताए उनको I would like to further elaborate. The other thing is again this is also education is also via week-long pharmacy activity. It is like this is of year 2021 World Antibiotic Awareness Week, where we have set up a dedicated counter for antibiotic awareness to the public, and we are in a walk, a seminar sessions, and we also educate session our doctors, nurses, and everyone who is involved in using antibiotics. So these are the strategies to improve awareness, and obviously when you transform knowledge, you give knowledge, obviously your antibiotic stewardship program would be strengthened. अब अगर हम एक कोर स्ट्रेटजी की बात करें, that is prescriber led review of appropriateness of antibiotics regimen. In the absence of direct input from an antibiotic stewardship team, where we should adopt such strategies. Like आप जो है वो बार-बार एंटीबायोटिक आईडी स्पेशलिस्ट को कॉल नहीं कर सकते, तो आप ऐसी स्ट्रेटजीज चूज करते हो। अब ये क्या स्ट्रेटजीज होती है? These strategies are like antibiotic timeout, stop orders, and auto DC like this. Auto DC में that's what आपका कोई भी order है तो वो 10 दिन के बाद not for us antibiotics you have for 3 days. ठीक है कि 3 दिन के बाद जो एंटीबायोटिक है वो DC हो जाएगी, ऑटो स्टॉप हो जाएगी। So what will happen that with this strategy an antibiotic will stop from pharmacy, then prescriber have to re-enter. जब prescriber को re-enter करेगा, while reordering she will review the antibiotic, and that might be that he or she would be of this mind that my patient does not require the antibiotics now. So in such kind of strategies जो है वो उसको दोबारा रिव्यू करता है एंटीबायोटिक्स को, उसमें ये हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसमें ये है कि एक और जो चीज जो कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टीवर्डशिप में, शॉर्टर इज इक्वल टू बेटर। देयर आर मल्टीपल स्टडीज दैट shows that short duration of therapy versus long duration of therapy. Let's suppose community acquired pneumonia के लिए जो अगर आपको रेफरेंस देखें तो it is of 2016 जमा का ये पेपर है, उसमें ये कह रहे हैं कि for community acquired pneumonia 3 to 5 days therapy is as equal as 5 to 14 days of therapy. So you could take help from these guidelines as well. अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक ऑप्टिमाइजेशन की, तो एंटीबायोटिक ऑप्टिमाइजेशन is usually done to have maximum output. It could be done via use like IV total switch, implementation of pharmacokinetic monitoring and adjustments program, intervention to reduce antibiotic therapy to the shortest effective duration, allergy assessments. So I will discuss these in next slides.
The one is the pharmacokinetic monitoring and adjustment. Pharmacokinetic monitoring adjustment program help us to have more appropriate dosing for drugs. For example, it is necessary for antibiotics to have appropriate drug concentration to be effective. So therapeutic drug monitoring might be effective for them. To avoid the toxicities, and along with it, if the concentration is not achieved, then what will happen? Like in case of vancomycin, if you don't have the appropriate level, then antibiotic resistance will develop. So in that case, pharmacokinetic monitoring and adjustment programs are very important, and you could implement it like for different drugs like aminoglycoside once daily dosing with the vancomycin continuous infusion versus intermittent infusion, beta-lactam extended infusion versus standard infusion. These are the strategies that enhance the compliance and also avoid and reduce cost and decrease the adverse effects. This is again a supplemental strategy that we use for this, that is the dinner dose adjustment for antibiotics. For the pharmacokinetic parameters, we disseminate this information to every pharmacist and doctors, and they have this short guide to make necessary adjustments. So this is a glimpse of the vancomycin continuous infusion protocol made by the pharmacy department, and other one is the extended antibiotic infusion protocols. At शिफा क्या होता है कि हम जो है ये protocols बनाते हैं, ठीक है, ये जो vancomycin के antibiotics के protocol बना लिए, उसके बाद वो antibiotic stewardship committee में discuss होते हैं, and then RD consultant जब उनको approve कर देते हैं तो फिर वो implement होते हैं. For you, if you are going to implement such programs, I would say to start with the pilot tests. Like pilot is like आप एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट करें. आप किसी भी एक वार्ड को ले सकते हैं, किसी भी एक स्पेशलिटी को ले सकते हैं. लेट्स सपोज आपने आईसीयू ले लिया, वहां पे अपने इसको रन किया. अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे जो वेंकोमाइसिन इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल था, ये हमें ये इशू है कि हमारे जो वेंकोमाइसिन के लेवल्स थे वो अक्सर पेशेंट्स में अचीव नहीं हो रहे थे. देन वी कम टू नो दैट कि हाँ कहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं. फिर हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया. उस प्रोटोकॉल के बाद आई हैवंट शोड दोज दैट्स. उस प्रोटोकॉल के बाद ये हुआ कि हमारे जो लो लेवल से जो ऑप्टिमल लेवल से तकरीबन वो हमने 86% पेशेंट में हमने ऑप्टिमल लेवल्स अचीव किए थे. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंटीबायोटिक ऑप्टिमाइजेशन में एक और चीज व्हिच आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज IV to oral switch. IV to oral switch is really the conversion of IV antibiotics to oral form when possible or when feasible. Appropriate use of oral antibiotics for initial therapy and then timely transition of patients from IV to oral antibiotics. And there are programs to increase the appropriate use of oral antibiotics, can reduce cost and as well as length of stay. IV to oral conversion of the same antibiotic is less complicated than other strategies and is applicable to many healthcare settings. IV to oral switch programs should implement strategies, assess patient who can safely complete the therapy with an oral regimen to reduce the need of IV catheters and to avoid outpatient parenteral therapy. It's a very important aspect. आप IV to oral switch जो आपके जो प्रोग्राम है इसके ऊपर बहुत जो है वो emphasize करें, क्योंकि जब जितनी IV एंटीबायोटिक्स यूज होंगी उतने कैथेटर्स का यूज होगा, इतनी डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्लड होगी एंड more infections could be. So when possible, always change from IV to oral antibiotics. It's a strategy for the optimization. Another one is intervention to reduce antibiotic therapy to shortest effective duration. As I have discussed earlier, that there are studies that demonstrate that shorter duration is as effective as longer duration. So we should implement those and recommending a duration of therapy based on patient-specific factor is an important aspect of antibiotic stewardship program, and we should look into it that if patient is can be de-escalated, क्या उसके antibiotic को जो है वो बंद किया जा सकता है,
ठीक है, या उसको जो है वो कल्चर बेस्ड थेरेपी मिल रही है या नहीं मिल रही। एट शिफा what we are doing, actually what we do, that we have a report of antibiotics duration from our IT department. We come to know which antibiotics are being used for how many days. Like we run a report for antibiotics that have been used for more than 10 days. So हमें पता चलता है कि ये वाली एंटीबायोटिक्स जो है इनको 10 दिन से ज्यादा हो गए। तो जब वो 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 2 our clinical pharmacists are involved in अराउंड रेस्टोरेंट, वहां पे तो इन चीजों को मोर क्लोजली देखा जा सकता है। लेकिन ये जो है कि ओवर द फॉर द होल हॉस्पिटल हम जो है इसको देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये एंटीबायोटिक है, तो हम उसको रिव्यू करते हैं वेदर इट इज कल्चर बेस्ड और व्हाट। फिर हम उसको फीडबैक लेते हैं एंड अगर हमें वो जरूरत हो तो हम जो है उसको डिसकंटिन्यू एटसेट्रा करवा देते हैं या उसको चेंज करवा देते हैं, और उसका यूज जो है वो रेशनल है। इसके अलावा जो the suitable approaches to include is developing written guidelines with specific suggestions for duration, as I have shown you our antibiotic guidelines. And next is antibiotic optimization के लिए आपको जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, 2 पॉइंट्स हैं जो कि लाजमी आप देखें, एक एट द स्टार्ट और एक जब वो चल चुके हैं। ठीक है, जब कभी आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करें तो यू शुड स्टार्ट स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट मीन व्हाट, वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। ठीक है, कि आप उसमें देखें कि ये एंटीबायोटिक जो है इसकी जरूरत भी है या नहीं है। ठीक है, या इसके लिए हमें जो प्रॉपर टेस्ट हैं वो है या नहीं। ठीक है, और जब अगर उसके बाद वो चल जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप उसको रिव्यू करते हैं, एंड इन रिव्यूइंग यू विल से दैट ओके आप पेशेंट के जो मार्कर्स हैं वो बेटर हो रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है, या जो है अब इसको हम स्टॉप कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब इसको नैरो स्पेक्ट्रम की तरफ स्विच कर लें या यही एंटीबायोटिक्स। सो you should be careful while at start, and you should keep on reviewing these medication from time to time, these antibiotics. अब अगर हम अगली बात करें तो दैट इज एंटीबायोग्राम। एंटीबायोग्राम क्या होता है? Antibiograms are often used by clinicians to assess local susceptibility rate, as in aid selecting empiric antibiotic therapy and in monitoring resistance trends over time within an institution. I think so most of you will be familiar with it. Antibiograms can also be used to compare susceptibility rates across institution and track resistance trends. Let's suppose क्या होता है कि एंटीबायोग्राम आपको बता दें कि आप एम्पेरिक एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं कैसे। ठीक है, एम्पेरिक एंटीबायोटिक आप कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स सपोज आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है पोल्ट्री में और जो आपके फार्म इंडस्ट्री है लाइक कैटल्स वगैरह, वहाँ पे किनोलॉन्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो आपने देखा होगा कि टाइफाइड में वी पीपल आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट आवर किनोलॉन्स। सो इन दैट केस हमारा अगर हम एंटीबायोग्राम देखें तो हमारे एंटीबायोग्राम में किनोलॉन्स वुड हैव ससेप्टिबिलिटी वेरी लेस। अब एंटीबायोग्राम आर आइदर रेजिस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी और ऑन द बेस ऑफ ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस। लेट्स सपोज अगर आप कहें कि रेजिस्टेंस की बेस पे, तो अगर आपको कहते हैं कि जी आपका ये बग ई कोलाई जो है वो 86% जो है वो रेजिस्टेंट है, इफ आई कुड ज़ूम इन like this. So ये जो हमारा एंटीबायोग्राम है ये ससेप्टिबिलिटी की बेस के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ई कोलाई के ऊपर जो ससेप्टिबिलिटी है एम्पिसिलिन की, दिस इज जस्ट 6%। सो आप किसी भी पेशेंट जो कि अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा ई कोलाई आता है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे एम्पिसिलिन नहीं देंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें आप ये देखें कि फॉस्फोमाइसिन की 97% है, इमिपेनम 81%, वेरोपेनम 86%। सो यू विल गो फॉर दोज एंटीबायोटिक्स जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। अब 97% का क्या मतलब है कि 3% ऐसे बग्स होते हैं ई कोलाई के जो कि रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जबकि आपके एम्पिसिलिन के जो है वो 94% होते हैं। सो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं कि एंटीबायोग्राम जो हमें हेल्प करता है। इसके साथ there is another strategy known as stratified. Stratified, as you know, the strata is dividing into groups. So I couldn't change it.
Okay. So stratified is another term that is used कि आप जो है हॉस्पिटल बेस्ड या उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बेस्ड पे आप जो है वो उसको आप कल्चर कर लें या जो टाइप ऑफ स्पेसिमेन आप यूज कर उसकी बेस पे आप एंटीबायोग्राम डेवलप कर लें. दैट इज अ काइंड ऑफ एडवांस्ड लेवल ऑफ एंटीबायोग्राम यू कैन से. एंड से भी सेंसिटिव होता है, लेकिन जो लैब है दैट वो जो है वो शो किसका कर रही है कि वो सिर्फ वेंकोमाइसिन का शो करे, वो लाइंजोलिड का शो ही ना करे. So this is a cascade reporting. It is employed at Shifa International Hospital. We use this strategy, though the data are limited that demonstrate direct impact of those strategies on prescribing. But some form of selective or cascade reporting is reasonable, and we are using it at Shifa International Hospital. इसके अलावा आप देखेंगे de-escalation and streamline therapy. De-escalation आप देखेंगे जब भी आपका पेशेंट ऐसा है कि आप उसकी एंटीबायोटिक्स को कम कर सकते हैं तो you should take measures, you should take steps to do this. अब इसमें जो है आप जो है इन्फेक्शन मार्कर्स का की हेल्प ले सकते हैं. लेट्स सपोज प्रोकैल्सिटोनिन. तो प्रोकैल्सिटोनिन is usually more related to bacterial infections. It has some limitations, but we should be careful. And लेकिन एक अच्छा मार्कर है जिसको आप यूज कर सकते हैं. अगर आप बात करें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम की, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हर चीज के जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बता देंगे कि हाउ मच योर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम इज वर्किंग. इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं. ठीक है, इसमें आप ये हो सकता है कि आप कंप्लायंस चेक कर लें कि आपकी कोई भी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक मेडिकेशन की डोजिंग हो रही है. लेट्स अगर मैंने अभी वेंकोमाइसिन का प्रोटोकॉल लिखा है तो मैं वेंकोमाइसिन प्रोटोकॉल की कंप्लायंस दिखा दूं कि जी मेरे पेशेंट 10 पेशेंट थे तो 10 में से 9 को इसी प्रोटोकॉल के तहत डोज मिली है, तो मतलब दे आर फॉलोइंग दिस. अगर उसके मुताबिक सिर्फ 2 को मिली है तो इट इज दे आर नॉट फॉलोइंग इट. सो दिस इज द कंप्लायंस. इसके अलावा आप देखेंगे IV टू ओरल स्विच हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स. दीज आर मल्टीपल काइंड ऑफ KPIs you could develop at their own depending upon the facility you have. And you should go enhancing one by one. जब आप एक KPI establish कर लें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, फिर आप नेक्स्ट की तरफ मूव कर लें. इसके अलावा एक और जो चीज होती है दैट इज द मेजरिंग मैट्रिसेस. जो सबसे सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड थिंग है वो ये है कि आप ये देखें कि जी मेरे हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स का यूज कितना हो रहा है. ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप ये कहेंगे जी पिछले साल हमने 10 लाख की एंटीबायोटिक्स ली थी, साल हमने 20 लाख की एंटीबायोटिक्स ली हैं, तो माइट भी शायद आपके हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स का यूज बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन ये तो एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है. लेकिन व्हाइल यू आर डूइंग antibiotic stewardship program, you should choose appropriate tool for showing the consumption, like DDDs. And DDDs is referred as defined daily dose, and DOT, days of therapy. There are multiple other references. जो सबसे common use होते हैं वो DDDs and DOTs, and these are quite easy to get it. other length of therapy हो सकते हैं, antibiotic free days हो सकते हैं. ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, सच काइंड ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज होते हैं. अब इनका फायदा क्या होता है कि ये एक टेस्टेड टूल्स होते हैं जो कि आपको बता रहे हैं. जैसे कि मैंने अभी कहा कि लास्ट टाइम में 10 लाख की मेडिसिन ली, तो 20 लाख की ली, तो आपको लग रहा है कि शायद मेडिकेशन ज्यादा यूज हो. इसको मैं एक और सिंपल वे में अगर मैं यूं कर दूं कि अगर पिछले महीने में हमने 100 इंजेक्शन यूज किया था और इस दफा हमने 200 इंजेक्शन यूज किया था, तो शायद ऐसा है कि हमने एंटीबायोटिक्स का यूज ज्यादा कर दिया. लेकिन ऐसा नहीं होता. उसको जो है आपने एक स्टैंडर्डाइज करना होता है. ठीक है, और वो DDs जो है वो पैरामीटर, सो आई कुडंट एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द टाइम. कि उसमें आप ये है कि लेट्स सपोज आपने पिछले माह में 100 इंजेक्शन डिस्पेंस किए थे, तो आपके पास शायद 100 पेशेंट हुए हैं. इस दफा आपने 200 इंजेक्शन डिस्पेंस किए, तो आपके पास 200 पेशेंट है, तो आपका एंटीबायोटिक यूज नहीं बढ़ा. ठीक है, सो दीज आर मल्टीपल टर्म्स जो टूल्स हैं, आप इनको सर्च आउट करें, आपको ये इजीली जो है वो अवेलेबल होते हैं, हो सकते हैं, और आप इनको इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, यही DDs का जो टूल है ये हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में यूज करते हैं। अलॉन्ग विद इट वी आल्सो यूज रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक पॉलिसीज, जैसे कि लाइनजोलिड जो है इस पे हमने रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है। अगर आप देखें हमारे लाइनजोलिड के ऊपर तो इन द स्टार्ट इट वाज 5.2, ठीक है, DDs की एक वैल्यू है 5.2, आई कांट एक्सप्लेन इट राइट नाउ, लेकिन 5.2 हमें ये लगा कि ये बहुत ही ज्यादा जो है लाइनजोलिड जो है वो यूज हो रही है ओरल, एंड इसी तरह जो है वो फिर आगे हमने देखा तो 3.81 जो है हमारे एंटीबायोटिक IV की जो लाइनजोलिड है उसका 3.81 यूज था। फिर हमने क्या कि हम इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। रिस्ट्रिक्टेड का ये मतलब है कि अब जो है सिर्फ ID कंसल्ट करेंगे तब ही आपको जो है वो लाइनजोलिड मिलेगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो लाइनजोलिड का यूज है वो काफी डिक्रीज हुआ। दिस इज नॉट द अपडेटेड वन। अभी जो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर की जो शीट है उसके मुताबिक जो लाइनजोलिड का यूज है वो मजीद डिक्रीज हुआ है ड्यू टू पुटिंग इट इन रिस्ट्रिक्शन। अब DDs का फायदा क्या होता है कि हम एक फोकस DUR कर लेते हैं, कि हमें लग जाता है कि यहाँ पे जरूरत है कि हमें एक DUR ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू करना है। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू ये होता है कि आप किसी भी मेडिकेशन के बारे में ये देखें कि वेदर इसका जो यूज है वो जस्टिफाइड यूज हो रहा है या नहीं, इंडिकेशन बेस्ड लाइक दिस, ठीक है। इट कुड बी प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो हम DDs की बेस पे DURs कर रहे होते हैं। फिर हमें अगर लगता है कि ये वाली स्पेशलिटी में इसका यूज कम ज्यादा हो रहा है तो हम उन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। उन डॉक्टर्स को हम अगर कोई लेटर्स लिखते हैं कि मतलब आपके यहाँ पे ये वाली एंटीबायोटिक का यूज जो है वो बढ़ चुका है। उसके बाद if I have to discuss the challenges in the antibiotic stewardship program, then there are multiple challenges while implementing antibiotic stewardship program in the hospitals, like a lack of resources. It includes money, staff, or lack of time, lack of expertise or experience among clinical staff, and gaps in laboratory capacity, since reliable lab data play a crucial role in adding appropriate therapy, and ability to track and report relevant data on antibiotic use to clinician and hospital administrators. ये कुछ challenges हैं जो कि आप सब लोग शायद अपने hospital में face करते होंगे, लेकिन also could be overcome, and for this I would say you should take help from the hospital leadership. And the best way is कि जब कभी आप leadership से antibiotic stewardship program के बारे में बात करें तो you should be equipped, you should know what is the importance of antibiotic stewardship program. And recently from in last 3 to 4 months I think so DRAP की तरफ से भी एक recommendation है कि every hospital should have an antibiotic stewardship program in the hospital. And फिर आप जो है वो step by step जो है वो चीजों को लेके चलें कि आपने इनको कैसे better करना है, and start smart with the low hanging fruit, as I have told you earlier, and ensure appropriate policy and guidelines are in place and applicable, and educate staff and public size stewardship campaign, and monitor your impact. For us at Shifa International Hospital, pharmacy quarterly newsletter issue करते हैं, तो हम जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम एक एंटीबायोटिक न्यूज़लेटर भी इशू करते हैं, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का। वो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का न्यूज़लेटर क्या होता है कि जिसमें हम अपने हमारी जो भी क्वार्टर में एंटीबायोटिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी एंटीबायोटिक का यूज हुआ होता है, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई होती हैं, कोई नई एडिशन होते हैं, कोई न्यू इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी प्रैक्टिस चेंजिंग चीज आई होती है, तो हम उसमें जरूर शेयर करते हैं। सो दिस वाज ऑल ब्रीफ. Sorry, I couldn't complete it in details, but if you have any questions, you could email me and surely I will get back to you. And thank you. If you have any questions, you could ask. Thank you very much, Dr. Rehan Anjum, for such a wonderful and interesting session on antimicrobial stewardship. Now moving towards question answer session. Dr. Rehan Anjum, we have one first question for you. Whether there is reference for nitrofurantoin that it will be used for longer periods, like for 3 months? Nitrofurantoin for 3 months. That's not a part of it. Okay. For the recurrent UTIs, you could use it, but in that case, you should use tapering doses or such kind of strategies.
but not for acute infections. You shouldn't use it for 3 months, but for recurrent infection, you should use it, and you should use in tapering dosages. Like there would be days off and days on for relapse infections. Okay, we have next question for Dr. Mehreen Muzammil. How to manage irrational use of antimicrobials in community pharmacy? इन कम्युनिटी फार्मेसी डिपेंड्स कि आप कौन सी कम्युनिटी फार्मेसी की बात कर रहे हैं. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है तो आपने अपने फिजिशियंस के साथ मिलकर अपनी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करना है और उनकी एजुकेशन करनी है, उनसे इंडिकेशन पूछनी है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी फार्मेसी इन कम्युनिटी नॉट एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल, तो वहां पर पेशेंट एजुकेशन को ज्यादा फोकस किया जाएगा. लेट्स सपोज अगर एक ऐसी कम्युनिटी फार्मेसी की आप बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल से लिंक नहीं है, तो वहां पर अगर कोई भी मरीज आ रहा है कोई प्रिस्क्रिप्शन लिए बगैर, तो यू कैन गाइड देम कि भाई इसके लिए आपको एंटीबायोटिक की जब जरूरत हो तभी लेनी है. So it all depend on your feasibility and the type of community pharmacy that you have. Our next question is how to minimize double coverage or duplicative therapy. Dr. Rehan Anju. Sorry, could you repeat it? How we can minimize duplicative therapy, double coverage? How we could minimize, the important thing is that you should have a knowledge about it. That if it's an infection, it's what kind of infection or what kind of antibiotic is covering it. If you have the knowledge that okay, if you are using a metronidazole and if you are using a meropenem, and both have anaerobic coverage. So I think so. The most important thing is that you should have a knowledge. I mean, you will have that knowledge. You can say, okay, and I would say whenever you are going to make an intervention, you should have appropriate knowledge. You should have your homework done to consult with the doctor, and you will say that, okay, sir, yes, you are giving this antibiotic, and we also using this antibiotic. So they have the same coverage, and only the knowledge, I think so, could work on it. And the other thing is, as we are using in our hospital, that is, we are taking help from our computerized order entry system, that whenever a drug is added in the system in MAO and doctor is charging another antibiotic, he gets a pop-up that there is therapeutic duplication. So that could be an advanced level, but for initial level, I would say that you must have a knowledge about the coverage, and you should share the references. Okay, sir, for this infection, this drug is recommended, and we are giving it, so we should stop. And I would say for community people, you should work on it. Our next question, in which type of infections we can use empiric antimicrobials? Dr. Mehreen Muzammil. Basically we need to understand the meaning of empiric use. Empiric use means that you are suspecting some infection, and because of that infection suspicion, you are starting antibiotic, and for that you need to send cultures definitely. Empiric use does not mean that you start antibiotic just on suspicion. You need to send the cultures and then follow it. Let's suppose अगर कोई patient sepsis में है, sepsis suspect कर रहे हैं, तो तमाम blood cultures और urine cultures और tract cultures भिजवाने के साथ साथ आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, तो दैट विल बी द एम्पिरिक यूज व्हेन द कल्चर्स आर बीइंग सेंट. Our next question is what are the restricted antibiotics? And either restricted antibiotics will be an IV formulation, like if fosomycin is restricted in intravenous formula, so why it is not restricted in oral formula? Yes, I think so. I should answer it. For the restricted antibiotics, are those antibiotics that are kind of last resort antibiotics. If we don't use them appropriately, then what we will end up? We'll end up in resistance. जैसे कि आपने कहा कि फॉस्फोमाइसिन या जो भी है, ठीक है, लाइनजोलेट की बात होगी, ठीक है. फॉर लाइनजोलेट वो है VRE के लिए लाइनजोलेट है, ठीक है. तो अगर आप MRS से या हर तरह के इन्फेक्शन को आप लाइनजोलेट के साथ ट्रीट करते रहेंगे, तो क्या होगा
कि इन द एंड शायद आपके जो भी बग्स होंगे वो लैंजोलिड के साथ भी रेजिस्टेंट होना शुरू हों। तो रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स क्या कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि फर्स्ट लाइन नहीं होती, जो कि आपकी सेकंड लाइन होती है, जो कि रेजिस्टेंट बग्स के अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ आईवी के लिए होता है, नहीं, बिल्कुल आईवी के लिए नहीं होता, ठीक है। इट इज एज इक्वल एज फॉर ओरल एंटीबायोटिक्स, बट फॉर द केस ऑफ फॉस्फोमाइसिन, अगर आप फॉस्फोमाइसिन आईवी और फॉस्फोमाइसिन ओरल की बात करें तो देयर इज डिफरेंस, ठीक है। जो फॉस्फोमाइसिन ओरल है, सो दे आर वेरी लिमिटेड एविडेंस कि आप जो है इसको जो है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन अच्छी नहीं होती। बट फॉर यूरिन इन्फेक्शन जो होता है, फॉर यूटीआई जो है वो आप इसको यूज करते हैं। सो इट डज नॉट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू द formulation. Both IV and oral are equally applicable, but for the case of fosfomycin, they have a different pharmacokinetic profiles. So that's why जो है इस पे restriction नहीं use होती, and for fosfomycin oral जो है वो एक single dose would be as effective for UTIs. Okay. Next question: why we will not manufacture all drugs as extended release drugs? So more drugs will be saved and also easy for patient to take it. Dr. Mahir Muzammil. So extended release का मतलब ये है कि ड्रग जो है वो ऐसी डोजेज फॉर्म में है कि पेशेंट एक दफा ले और the blood levels are okay. So it always depend on pharmacokinetic properties of the drug. कि उसकी फॉर्मुलेशन पे वो स्टडीज हुई भी है या नहीं हुई भी, वो फॉर्मुलेशन बनाई भी जा सकती है या नहीं, तो उस चीज उन सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, और हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग पे भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ ही इतनी ज्यादा है कि उसको एक्सटेंडेड रिलीज में क्यों बनाएंगे, उसकी तो हाफ लाइफ ही ज्यादा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। Thank you so much, Dr. Rehan Anjum and Dr. Mahir Muzammil, for your precious time. And I would also like to appreciate our audience to remain with us and participate in the session. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you so much.